I'll be listening to you. A very warm good afternoon to all our dear beneficiaries and respected sir. Today we are gathered here again through the online mode in our series of health related webinars. This is our 55th webinar with the topic being stress management. Stress, as we all know, has become a leading cause of morbidity and indirectly leading to a lot of non-communicable diseases in the present world. भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन एक समय की मांग बन चुकी है. So, without further ado, I would hand over the session to Sir. I request all our beneficiaries that if there are any queries pertaining to the topic, chat box में please type कर दीजिएगा and we will take it up at the end of the session. So, over to you. Thank you. Thank you, Ms. Nitya, and very warm welcome to all the beneficiaries who are joining us today on this very important topic of stress and its management. Stress, जैसे कि आपको आम भाषा में बहुत commonly use करते हैं हम लोग कि बहुत सारे factors हैं. There are multiple factors which cause stress to us in our daily lives, and especially in our modern lives, the number of stressors have gone up. It's a fashion nowadays to hear people talking about stress, especially teenagers and adolescents and young adults as well, because as a child grows, he faces stress in the form of academics, in the form of building friendships, relationships, and later on, then when he grows up, there is a added pressure of a job or building his career. Then later on, the married life brings a lot of stress to us, then financial issues and housing issues. So there are multiple stresses that we all faces, and we'll be talking about how the common stresses affect us, common stressors affect us. What is stress? Stress actually hota kya hai, and how to deal with it. I'll be talking more about how to deal with stress, how to relax yourself, and let not stress affect you. So let's begin my presentation. And as you can all see, I'm Dr. Manushri Gupta. I'm associate professor and faculty at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. And I've been talking about stress for a pretty long time. I've made a number of presentations on stress, and there are a number of studies that we have carried out in the department based on stress and its effect on the body. So let's come to the definition of stress. Stress hota kya hai? In Hindi, there are a number of paryayavachi for stress. There are a number of synonyms that we know stress by. One is tanav, dabav, aam bhasha mein thakan, bhar, bal. Tanav is the most commonly used word in Hindi that the stress is known by. I'm sure there must be multiple other words in other Indian languages regarding stress. I'm not aware of them, but our beneficiaries must be. So it's kind of a pressure that we feel on our mental health, and as a result, our bodies are affected by it. So stress means feeling troubled or threatened by life. Now, why this stress came into being? How did this stress arise, and what is the importance of stress in our lives? So stress can be actually beneficial to some of us. Little stress is actually good in the sense that it leads us to, it drives us to achieve something, to achieve a goal. If we are not stressed about coming at the right time to the office, our punctuality will suffer. If we are not stressed about carrying out a work or completing our work on time, then our work efficiency gets suffered. And if we are not stressed, then we'll not try to achieve higher things in life. So a little bit of stress is actually good for us. So stress can be due to major threats. These are some of the examples that you can see here. The one man, like this man, is imagining that मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया. One man did really something bad to me.
or stress can be due to family violence, domestic violence. There can be conflicts between husband and wife, between children and parents. So family violence or family conflicts can lead to stress in daily life. Illness, any medical illness, any physical illness, however minor it might be, even a bruise or a wound on your finger can cause stress to you. Um, um, any chronic medical illness, for example, diabetes or hypertension, is a factor that causes chronic stress, prolonged stress that has deleterious effects on the body as well as the management of diabetes or hypertension. Problems providing for your family, these are the stresses that a large number of our fellow countrymen go through when they are trying to arrange for even basic necessities of life for their family, like fooding, sheltering, and minor finances. Arguments within your family, uncertainty about the future. This is a depiction of a child or an adolescent who is going to appear for an examination. He or she is uncertain about the future, what will happen if she fails or if he fails. We all know that this is the first major stress that we undergo in our lives. Then there are those who are displaced from home. There is a large number of internal migration that happens within our country. The northern and eastern parts of our country give cheap labor, supply cheap labor to industrial zones in the west, in the south, and as a result, these families are displaced. So that is also a cause for major stress in their lives. Now, stress occurs when this is a mathematical equation, but it denotes how stress actually occurs. Stress occurs when the pressure, tanav, is greater than the resource. Now, what is the resource that we have? Resource is our inner strength. That R, ये जो R है, ये डिपेक्ट करता है कि हमारा जो inner strength है, हमारा reserve है, वो कितना strong है, वो क्या छोटी मोटी परेशानियों और तनाव को झेलने के लिए sufficient है कि नहीं. When this tanav or the pressure gets bigger than the resource, अगर उस person की coping ability को वो exceed कर जाता है, then it leads to stress. Minor stresses तो हम सब झेल लेते हैं, but हर individual की जो coping capacity होती है वो different होती है. So even a minor stress can cause significant amount. A minor life event can cause a significant amount of stress in somebody's life, while a more mature person who is more experienced can withstand a larger amount of stress in life. So how to build up that reserve? I'll talk about it in the later part of my presentation. How to build up that reserve. अपना reservoir आप कैसे strong कर सकते हैं? Now, this is a very popular or famous curve that we have studied and we know as the Yerkes-Dodson curve. ये एक curve होता है जो depict करता है कि आपका performance कैसे affect होता है if the stress continues to increase. So this axis shows the amount of stress, and this is how your performance is affected. So too little stress, when जैसे कि कोई एग्जाम है या टेस्ट है या एक बहुत ही आपकी मनपसंद एक जॉब आपकी लग गई है, and the conditions in that job are very congenial. अच्छे आपका colleagues बहुत अच्छे मिले हैं, आपके boss बहुत अच्छे हैं, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है, so there is too little stress and the performance actually goes up a little bit, but then it stagnates. थोड़े देर के बाद वो stagnate कर जाती है क्योंकि आपको drive करने के लिए significant amount of stress नहीं है. Now this yellow zone is what we know as the optimum zone. इस zone का stress, अगर आपको कोई drive करने वाला आपका कोई colleague है या आपका boss है या आपका कोई ऐसा career path है जो कि you want to become a pilot or a doctor or an engineer and you really like, you're passionate about that subject, or even a sportsman, then you will put in much more effort and your performance will, as a result, reach its peak. But after that peak, if the stress grows on, if the stress exceeds this peak, then fatigue sets in, exhaustion sets in, and then there is a fall in your performance. So this happens, this curve happens to us all the time during our lifetime. जब ये stress ज़्यादा हो जाता है, then we burn out. Then there is anxiety, panic, anger, and then a complete breakdown. So favorable stress and unfavorable stress are the two types of stress
Favorable stress, as you can see in the green zone, promotes and facilitate learning and performance. Unfavorable stress suppress and inhibit learning and performance. So these are the two major types of stresses, favorable and unfavorable. Now, what this is a bit scientific slide, but I would like to explain it to you in simple terms that every person's coping ability, हर किसी की जो क्षमता है, जो उसका resilience है, जो उसकी coping skills हैं, किस तरह से वो handle करता है stress, ये largely genetically determine होती हैं. और दूसरा एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट मींस आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको कैसे पेरेंटिंग दी है, डिड यू अंडरगो अ वेरी लविंग एटमॉस्फेयर आपके जब छोटे थे आप, तो क्या एक लविंग पेरेंट्स आपको मिले कि नहीं मिले, और कितने आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बचपन में ऐसे थे जो बहुत एडवर्स रहे हैं. पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी रह सकते हैं, पॉजिटिव रोल मॉडल्स भी हो सकते हैं, पर बहुत लोगों को एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस भी झेलने को मिलते हैं. उनमें से कुछ फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, निग्लेक्ट हो सकता है पेरेंट की तरफ से, कोई पेरेंट का एब्सेंट होना होता है, या कोई पेरेंटल डेथ हो सकती है कि आपको सिंगल पेरेंट ने पाल के बड़ा किया या कोई पेरेंट नहीं था आपके. So these kind of early significant stressors in life lead to a lowering of stress threshold. आपका जो threshold है, जो आपकी coping ability है, वो बहुत कम हो जाती है later on in life. So even a minor आपके अगर changes होते हैं life circumstances में, then it can result in a breakdown. So these two factors are actually very important in determining your capacity to undergo stress. Genetics, if your parents are very well endowed with the strong capacity to withstand stress, वो बहुत आदर्श और बहुत ही मजबूत अगर पेरेंटिंग उन्होंने करी है, खुद वो स्ट्रेस झेलने लायक, बहुत आपने उनको देखा होगा कि वो स्ट्रेस को कैसे झेलते हैं. अगर सब अपने पेरेंट्स को याद करें बचपन में, तो अलग अलग आपको पैटर्न्स मिलेंगे. कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं अगर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है, बहुत एंजाइटी प्रोवोक हो जाती है, या कुछ होते हैं लोग सब्सटेंस यूज करने लगते हैं, जैसे अल्कोहल लेने लगते हैं या सिगरेट पीने लगते हैं इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. सो दीज आर नॉट वेरी गुड कोपिंग मैकेनिज्म्स. इससे आपका जो आगे का कोपिंग स्ट्रेंथ है वो और वीक होती जाती है. सो दिस इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट कि आप स्ट्रेस कैसे झेल सकते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जेनेटिक्स वीक हैं तो आप स्ट्रेस को झेलने की क्षमता को बढ़ा नहीं सकते. बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और वो हम आगे के प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कैसे वो हम कर सकते हैं. Now reactions to stress, these are some common reactions कि stress की स्थिति में हम कैसे react करते हैं, how do we react to stress. Everyone experiences stress at times, and a little bit of stress is not a problem, as I said earlier as well. But very high stress often affects the body. So body पे बहुत सारे significant symptoms आने लगते हैं if we undergo acute stress or long standing stress. तो उसमें क्या क्या changes आने लगते हैं. For example, anxiety के symptoms क्या होते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, हाथों का कांपना, आवाज का कांपना, और दिल की धड़कन तेज होना, पेट खराब हो जाना, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, ये भी एक एंजाइटी का सिम्टम है. या कि आपकी मसल्स जो हैं वो टेंस रहती हैं. सिर दर्द होना भी एंजाइटी का सिम्टम है. अगर आपको क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक रहता है और उसका कोई कारण नहीं मिल रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज ड्यू टू एंजाइटी, जो या कोई स्ट्रेस आप लगातार झेल रहे हैं या सोच रहे हैं. सो दीज आर द सम कॉमन बॉडीली सिम्टम्स दैट वी कैन सी दैट हेडेक हो सकता है, आपकी भूख खत्म हो सकती है, एपेटाइट का लॉस हो सकता है. देन लंप इन थ्रोट, बहुत लोगों को एक गले में अजब अलग सी फीलिंग आती है. देन दिस नेक एंड शोल्डर पेन, ये बहुत कॉमन है. अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस में हैं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की भी जरूरत नहीं है, आपको नेक और शोल्डर पेन हमेशा बना रहेगा. Then there is heaviness of chest, back pain, upset stomach, and tight muscles. So these are some of the common reaction to stress on our body. Now these are certain emotional reactions. How do people react when they undergo stress? They cannot focus. कोई एग्जाम आने वाला है बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है. This is a very common scenario in our houses, in our homes, when we see our children that एग्जाम में जो बच्चा एंजाइटी अच्छे से या स्ट्रेस अच्छे से झेल लेता है उसके नंबर ज्यादा आते हैं. बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर, इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है. आफ्टर 10th and 12th,
intelligence does not play a very large role in determining your educational achievement. It's your other abilities, your coping abilities, your ability to handle stress that actually determine कि आपका academic achievement या आप career में क्या कर पाते हैं, अपने आप को regulate कर पाते हैं कि नहीं, that is determined by such abilities. Get angry easily, बहुत irritable रहते हैं, cannot sit still, fidgety रहते हैं, कभी इधर मूव करते हैं, चेयर में भी नहीं, कहीं भी उनको आराम नहीं मिलता. Sleep difficulties होने लगती हैं, feeling sad or guilty. Then there is a constant worry, आप जो एक chain reaction की तरह worry करते रहते हैं कि अपने मन में एक chain बनाते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, और अगर ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा. तो इस तरह की chain reaction हम worry के form में करते रहते हैं. Then there is spontaneous crying, आंसू आ जाते हैं. Feel very tired, आपकी body में energy नहीं रहती, फिर आप multivitamins लेने लगते हैं, but कोई फायदा नहीं होता मल्टीविटामिन्स का. सो दिस इज ड्यू टू क्रोनिक स्ट्रेस. एपेटाइट चेंज होते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा भी खाने लग सकते हैं, या आपकी एपेटाइट में लॉस भी हो सकता है. एंड मेनी ऑफ अस थिंक अ लॉट अबाउट बैड थिंग्स फ्रॉम द पास्ट और बैड थिंग्स वी फेयर इन द फ्यूचर. तो हम करंट पे फोकस नहीं कर पाते, हम जो करंट स्ट्रेस है या करंट एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्टिवली. वी ट्राई टू इमेजिन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट कि तब ऐसा हुआ था तो शायद मैं बहुत खराब इंसान हूँ, या उसने मुझे ऐसा बोला था तो कमी मेरे में ही है. तो इस तरह के जो इमेजिनरी हम सिनेरियोज बनाते रहते हैं, फ्यूचर के सिनेरियोज बनाते रहते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, जबकि थोड़े दिन बाद हमको पता लगता है कि जो हम इतना वरी कर रहे थे वो एक्चुअली वर्थ ही नहीं था. सो दीज आर सर्टेन रिएक्शंस टू स्ट्रेसेस दैट वी हैव ऑल फेल्ट. हुक थॉट्स क्या आते हैं, ये मैं थोड़ा सा और डीप में जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आप कैसे वरी करने लगते हैं जब स्ट्रेस आता है. सो हुक थॉट्स क्या होते हैं? हुक आपने देखा ना, अगर कोई फिशिंग कर रहा होता है, ये जैसे यहाँ पिक्चर आप देख रहे हो, फिशिंग रॉड से अगर आप फिश को पकड़ते हैं, हुक फंस जाता है उसके मुंह में, तो चाहे जितना भी कोशिश करे उस हुक से निकल नहीं पाती. ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हमारे कोई दिमाग में हुक थॉट घुस जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उससे हम फ्री नहीं हो पाते हैं. So when something is on a hook, it cannot get away. The hook traps it. That is what happens in cases of hook thoughts. These powerful thoughts and feelings are a natural part of stress, but problems can occur if we get hooked by them. So ये thoughts and feelings एक तरह से short circuit कर जाती हैं हमारे brain में. They keep on revolving inside our brain and we are not able to get free of them. So hook thoughts को आपको identify करना है. You have to identify it, label it, and then become free of it. So one moment you might be playing with children, आप बिल्कुल normal हैं, घर पे आप गए ऑफिस से, but अचानक से suddenly you feel, suddenly you think about something that has happened with your colleague or your boss in office. कोई ऐसा इवेंट बॉस ने आपको कुछ कह दिया, तो आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं शाम को, बच्चा अचानक से वो हुक थॉट आपके दिमाग में आ गया, और फिर suddenly you become angry and withdrawn from your फैमिली. ऐसा सबके साथ हुआ है. आई एम श्योर यू कैन अप्रिशिएट दैट कि ऐसा हम सबके साथ होता है. एंड देन व्हाट टू डू इन सच सिनेरियोज. सो जो हुक थॉट्स है वो आपको आपकी सराउंडिंग से खींच लेते हैं, आपको अपनी फैमिली से अलग कर देते हैं. जो कोई जॉब है, जैसे कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वो बच्चा अपने फोकस नहीं कर पा रहा है कि अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करे, उसके दिमाग में वो वरी या हुक थॉट कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है. सो we have to go back to our values, जो हमारे डिफाइनिंग एक हम जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर वापस जाना चाहिए हमें कि what values do we have inside of us. Are we loving? These are the certain list of values that we all try to inculcate in ourselves. Are we very loving? Are we wise? Attentive होते हैं, committed होते हैं, persistent होते हैं, responsible feel करते हैं. You feel that you are a very responsible person or a loyal person or an honest person. So these are our inherent basic values. Now जब ये worry होती है या stress होता है तो हमारी values से हम अलग act करने लगते हैं. For example, I consider myself to be a very kind person, but when I have a stress or when I worry too much, मेरे को वो kindness भूल जाती है and I can be mean and I can be rude to people. So हमारा जो behavior होता है बहुत rude हो जाता है दूसरों के प्रति, हम वैसे नहीं रहते जैसे हम एक्चुअली हैं. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति कब चेंज हो रहा है.
and stop right there and go back to the basic value of what you think that you are. So values describe the sort of person you want to be, how you want to treat yourself and others and the world around you. So try to inculcate this principle that you should treat others in the same way as you want to be treated by others. So ये बहुत बार आपने सुना होगा movies में और popular culture में, but it's a very good advice you can give yourself. So यहाँ पे examples हैं कुछ hook thoughts के. For example, एक ये young mother है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, and it's a very stressful situation जब एक first child born होता है family में, and the mother has to take care, especially in nuclear families. So sometimes it can lead to a lot of stress on the mother, and the mother can give up and say that it is all too hard. जबकि ऐसा सदियों से लोग करते आ रहे हैं. Child rearing practices have been known to all of us, and but still the mother can feel a sense of overwhelming anxiety, and then she can have a thought of giving up, that she's a failure, she's not a good mother. So these kind of repetitive thoughts go on in her mind. Then we have a tendency to blame others when we undergo stress. For example, in our office, we try to do not take the responsibility for what has gone wrong. अगर आप कोई गलती करते हैं, so it's our tendency not to take the blame on ourselves, but to deflect the blame on situations or other people. That it is his fault. So this kind of blaming others is a tendency when we undergo stress. Or harsh judgment about self, like I am weak, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाकारा हूँ, या मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, या करियर में कुछ नहीं कर सकता. So these kind of definite statement कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ based on just one small happening in your life is what causes more stress to us. ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रेस आया, आपने अपने आप को ब्लेम किया कि जैसे एग्जाम में आप पहली बार फेल हो गए एक एग्जाम में एक सब्जेक्ट में, then you have a maximizing thought. इसको maximizing thought बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता. For example, that has happened to a lot of children and adolescents that come to us, especially math anxiety जिन बच्चों को होती है ना. तो when they get low marks in maths, and which is very common in class 8th or 9th, so they say that I cannot study maths. They have a definite statement, और उनमें पेरेंट्स भी इस बात का सपोर्ट कर देते हैं कि मैथ्स नहीं पढ़ सकते, मैथ्स में वीक है. When you keep repeating that sentence कि मैथ्स में वीक है, you start believing that, and you cannot come out of it. And maths is a subject which is wholly dependent on the teacher. If you get a good teacher, you'll be good in maths. If you practice maths, you'll be good in maths. Maths does not have an innate intelligence. हमारे दिमाग में maths का कोई center अलग से नहीं होता. So harsh judgment about ourselves, memories, especially about different events, thoughts about the future that we have talked about earlier. So two fundamental concepts in understanding how we become stressed are comfort zone and our beliefs. तो इसको समझते हैं कि हमारा comfort zone क्या होता है. So this is a diagram which depicts a comfort zone, and when we try to come out of the comfort zone, we become stressed. So we go back to our comfort zone. For example, एक 15 साल का बच्चा है, adolescent है, he has a comfort zone, he has a comfortable life, his parents earn well, he lives in a upper middle class society, he studies in a very good school, and he has a lot of friends, but he does not interact with them. He has video game PlayStation, सारी सुविधाएं हैं उसके पास, और वो स्कूल से आता है और थोड़ी सी पढ़ाई करता है और अपने PlayStation पे बैठ जाता है. So that is his comfort zone. Now when the stress of boards exam 10th or 12th आता है, या 12th के बाद कोई competitive exam आता है, so that is वो उसको comfort zone के बाहर आना पड़ेगा, उसको effort करना पड़ेगा. So ये थोड़ा सा stress होता है, minor stress होता है, और इसमें growth हो सकती है अगर वो उस stress को meaningfully adapt कर लेता है अपनी life के साथ, तो उसमें उसकी growth होती है, उसकी career की growth हो सकती है. But अगर वो स्ट्रेस उससे ज्यादा हो जाता है, अगर उसकी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड हो जाता है, देन ही पैनिक्स, उसमें पैनिक आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, एंड देन इट कैन लीड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो
हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, हम कहीं भी कुछ नया सीखने जाते हैं, कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल कोई सिटी मूव करता है, सो दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, दैट कैन बी इन द ग्रोथ जोन। बट कुछ लोग जल्दी पैनिक कर जाते हैं, उनकी जो कोपिंग एबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, सो पैनिक में आ जाता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग, आई know that public speaking is one of the fears, most common fears that people have. So अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, जिसको पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी होती है, और वहां पे 50 लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो इट कैन ट्रिगर अ पैनिक, एंड देन यू डिटरमिन दैट मैं एक बहुत ही खराब पब्लिक स्पीकर हूँ और मैं कभी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। So these kind of statements actually lead us to believe in them. So this is what happens. एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एग्जाम एंजाइटी बहुत कॉमन है, we see a lot of patients with exam anxiety and there may be children in your house who have exam anxiety. So एक तरह का thought chain reaction अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, so एक बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, उसको पैनिक हो जाता है कि उसका his course is not finished, his syllabus is not complete, then he panics, he gives up, he is unmotivated to स्टडी इवन फर्दर। सो अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उसका जो चांस है पास होने का वो और कम हो जाएगा। ही एक्चुअली फेल्स एग्जाम एंड देन ही सेज दैट इट प्रूव्स दैट आई वाज राइट, दैट मेरे को कोई चांस नहीं है पास होने का। दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट चिल्ड्रन मेक एक्चुअली, कि कोई इस बार तो कुछ भी कर लूंगा, मैं पास नहीं होगा। एंड देन ही डज नॉट स्टडी, एंजाइटी बढ़ती है, ही बिकम्स अनमोटिवेटेड, देयर इज मोर चांस ऑफ हिम फेलिंग, द चांसेस ऑफ हिम फेलिंग इंक्रीजेस, and then उसका जो initial statement था is proved right. So as opposite, एक another scenario is notice the difference between the two. ये एक दूसरा बच्चा है या सेम बच्चा हो सकता है, अगर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। I can do it is the initial statement, मैं कर सकता हूँ, एग्जाम में पास हो सकता हूँ। He enjoys study, he imagines passing, imagination of सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत एक कॉमन भाषा में बोलते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने, तो दैट इज, वो इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रीच दैट गोल। So he imagines passing and then he becomes confident, he works even better, he studies more, he passes the exam, and then his belief in himself, his capability actually increases. So this is a self-feeding cycle. जो इनिशियली आप सोचते हो, आप बाद में उसको प्रूव कर देते हो दैट वाज द इनिशियल स्टेटमेंट वाज राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन गो टू हियर, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। नाउ we have a fair idea of what stress is, what are the major stresses, how our body reacts to stress, and then we can come to stress management tools, how to manage stress. So there are three main techniques, main domains in which you can manage your stress. Change your thinking, easier said than done. Change your behavior, this is a bit more easy than changing your thinking. And changing your lifestyle, this third part is the easiest, lowest hanging fruit that you can all achieve. So mindfulness is something that was known in our ancient Vedic traditions as well as yoga, but since now it has been studied by the Western scientists, there is more evidence on how it acts on our body and how it reacts. It causes to lower stress in our body and the effects of stress on our body. So mindfulness क्या चीज होती है? What is mindfulness? Mindfulness simply means being present, being in the present moment. ठीक है, जब आप stressed out होते हो, anxious होते हो, so we are not fully aware of our surroundings. For example, we automatically eat our food without even sensing कि कितना खा रहे हैं या तो खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या आ रहा है। शायद हमने लास्ट टाइम इतने आराम से बैठ के खाना बहुत ही पहले खाया होगा, बचपन में खाया होगा, पर अब तो इतनी रश लाइफ्स हैं कि we do not even taste what we are eating. Mindfulness ईटिंग इसको कहते हैं।
Then there is mindful breathing. What is mindful breathing? Then we become aware of our breathing. During जब हम busy होते हैं बहुत ज़्यादा, then we are not even breathing properly. हम बहुत ही shallow breathing कर रहे होते हैं, but the real breathing should be from the abdomen. हमको stomach से breathe करना चाहिए अगर हमको अपना stress level कम करना है. So एक example, ये मैंने mindfulness के आपको examples दिए. This is a pictorial presentation of what you can do in the evening today. You can practice this skill. For example, when you're drinking tea or coffee, focus your full attention on the coffee or the tea. You notice the drink with curiosity. You can have a look at it as if you have never encountered such a drink before. आपको एक novelty की feeling आनी चाहिए कि अच्छा, this is actually tea. I've never tasted it. You notice its color. You notice its smell. आपको वो savor करनी चाहिए. You actually take in that जो उसकी odor आती है या smell आती है. That's very relieving. And you sip it slowly. धीरे धीरे आपको वो coffee savor करनी है. उसका मजा लेना है. In Hindi, if we can say it like that, let it sit on your tongue, feel it on your teeth, and savor the taste. You drink it as slowly as possible, savoring the taste, noticing the temperature. You notice the movements of your throat as you swallow. You notice the taste fading from your tongue as you swallow. So पूरे process को आपको actually experience करना है, feel करना है, and that is how you can practice mindfulness. इसमें आपको अकेले कहीं पहाड़ पे जाके नहीं बैठना है. You don't have to sit on top of a mountain to actually go into dhyan or something. It's daily meditation that you can inculcate in your daily lives. So what other activities that you can engage in? For example, if you're going for a morning walk, do not just walk briskly. Actually savor the surroundings, the trees, the wind that is blowing on your face, the sweat that is coming from your forehead. So you have to actually try to experience everything. Be in the present moment. कोई thoughts आते हैं आपको, intrusive thoughts आते हैं आपको, worry करना होता है, let them come and go away. Do not try to stop them. The thoughts will come to you, but if you do not react to those thoughts, then they will automatically disappear. So these are certain breathing techniques for stress relief. Basically four techniques that this diagram depicts. Belly breathing, मैंने जैसे आपको बताया, आप लेट के कर सकते हैं whenever you have time. You place one hand on your chest and one hand on your abdomen, और अपने chest के और abdomen के, अपने stomach के movements को आप feel करें और deep breathing करें. Breathing को count कर सकते हैं. Mindful breathing कैसे करते हैं? This I would like to tell you all. It's a very important, it's a very safe practice that you can do anywhere in your office or your homes. आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा कि आप कोई practice भी कर रहे हैं. So for that you have to be aware of how the air goes through your nostril, the warmth or the cold air जो भी जाती है, then you can feel it going through your throat and then expanding your lungs. Hold that breath for some time, then deflate your lungs. धीरे धीरे exhale करना है and let it come out of your mouth or nose, wherever. It is not very important, but you have to be aware कि ये जो air का movement हो रहा है ये कैसा हो रहा है. Do it 20 times, 3-4 times a day, wherever you are, and you will notice the difference. Breathing visualization, for example, ये आपको कई बार आपने सुना होगा टेक्निक, टेक इन पॉजिटिविटी, लेट आउट नेगेटिविटी. इस तरह की आपको नेगेटिव चीजें या नेगेटिव कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, उसको इमेजिन करके उसको बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, अपने माइंड से. सो दिस इज ब्रीदिंग विजुअलाइजेशंस. You can read about it or see the videos. There are multiple videos available on YouTube कि mindful breathing कैसे करते हैं, breath count कैसे करते हैं, belly breathing कैसे करते हैं, and practice this. Actually it helps in reducing your stress. Now changing your thinking, this I said is the most difficult part, but it has the maximum benefits. अगर आपने अपने thinking process को आप change कर सकते हैं, then it has the maximum benefit in lowering your stress long term. So reframing and positive thinking आपने कई बार सुना होगा कि अपने thinking को positive रखें, पर रखते कैसे हैं?
So reframing क्या होती है? So reframing is a technique to change the way you look at things in order to feel better about them. आपको अपना नजरिया बदलना है चीजों को देखने के लिए, चीजें नहीं बदलेंगी. The stress in your life, किसी अगर इंसान से हो रहा है, some person is giving you stress, that person is not going to change, and that is not your job to change that person. आप उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आप किसी पर्सन को चेंज करने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, अपने कोपिंग स्किल्स चेंज करने पड़ेंगे. So there are many ways to interpret the same situation, so pick the one you like. Reframing does not change the external reality. As I said, external reality का मतलब है वो situation नहीं change होने वाली या वो person नहीं change होने वाला, but helps to view you things in a different light and less stressfully. For example, एक example है on your screen that एक situation है that some friends are going out to dinner this weekend and I wasn't invited. मुझे उस पार्टी में नहीं बुलाया गया या उस शादी में नहीं बुलाया गया या उस वेडिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि मेरे सारे रिलेटिव्स को बुलाया गया है. आपके मन में ऑटोमेटिक थॉट क्या आता है? माय फ्रेंड्स डू नॉट लाइक मी. मेरे जो फैमिली मेंबर्स है दे डू नॉट लाइक मी. दे थिंक आई एम बोरिंग और इरिटेटिंग और नॉट सक्सेसफुल. These kind of thoughts come into our mind, or I will end up having no friends. मेरे आगे कोई रिलेशन में कोई नहीं बचेगा, मेरे घर किसी का आना जाना नहीं होगा. And the feelings that you feel, the emotions that you feel are sadness. Sadness grips you. You feel dislike. You feel alone in the world. कोई भी मुझे नहीं चाहता, I'm alone in this world. And then the stress levels go through the roof. So जो आपको लगता है कि evidence that supports the thought, I do get moody every now and then. कभी-कभी मैं गुस्सा कर जाता हूँ. That is why हो सकता है लोग मुझे पसंद ना करते हो. Evidence that doesn't support the thought, my friends have told me several times that they think I'm fun and that I make them laugh. Other friends have not been invited to other activities. I do get invited to most things. So अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आपके रिलेटिव्स ने आपको पहले भी बुलाया होगा कोई फैमिली गैदरिंग में, या वो भी आपके घर आए होंगे and they think and they had a good time with you. So the evidence against these thoughts is also very strong. अब आप इसमें क्या कर सकते हो? आप एक alternative, you can have an alternative point of view that my friends like me, my relatives like me, but that doesn't mean that they have to invite me to everything or every occasion. अगर वो आपको कितना भी पसंद करते हैं, that आपको invitation card should not be the criteria of your worth in that person's heart or mind. So outcome क्या हुआ? You feel happier. I no longer feel stressed about this. So your assessment of the situation, आपका perspective यहाँ पे change होता है कि my friends like me, but that doesn't mean that they have to invite me to everything. ठीक है? Changing your behavior, be assertive, get organized. Organization is a big help to reduce stress. आपका अगर जो घर है वो या ऑफिस स्पेस है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, आपने क्लीनिंग नहीं करी है बहुत टाइम से, या आपकी जो पर्सनल स्पेस है उसमें आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं है, आपकी डेस्क ऑर्गेनाइज नहीं है. सो दिस लीड्स टू माइनर स्ट्रेसेस व्हिच एड अप. तो डेली के स्ट्रेस को हटा दिए जो आप हटा सकते हैं. वेंटिलेशन इज टॉकिंग टू समबडी. अपने जो मन की भड़ास है या स्ट्रेस है उसको किसी के आगे निकालना. ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लाइफ सीरियसली हर समय बहुत सीरियस मोड में रहते हैं और सीरियसली व्यू करते हैं थिंग्स को, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा. इट्स बेटर दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ शुड बी टेकन विद अ बिट ऑफ ह्यूमर एंड डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन. आई विल कम टू दिस इन द लेटर पार्ट. तो असर्टिव कैसे बने? असर्टिवनेस क्या करती है? हेल्प्स टू मैनेज stressful situations and will in time help to reduce their frequency. So agar aap assertive, what is assertiveness? Assertiveness is the ability to convey your feelings without disrespecting anybody. I'm not asking you to be aggressive, I'm not asking you to be disrespectful to others, but be assertive. agar aap सोच के कोई भी सिचुएशन सोच के अपनी बात नहीं कह पाते हैं, या अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा होता है और आप उसको रोक नहीं पाते हैं, you cannot say no to that people taking advantage of you. So this adds up to your daily stress and it can lead to a explosive situation later on.
So it's always good that you become assertive. कुछ लोग होते हैं बहुत शर्माते हैं, बहुत शाय होते हैं, उसमें बचपन के एक्सपीरियंसेस बहुत काउंट होते हैं कि बचपन में आपको कैसे आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, आपके और जो फैमिली मेंबर्स थे वो कैसे आपको ट्रीट करते थे. सो वहां से हमारी असर्टिवनेस आती है. अगर बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हुई है, बहुत डिसिप्लिनेरियन पेरेंट्स या स्कूलिंग हुई है, तो आप कम असर्टिव होते हैं आगे बढ़ के. So the key to assertiveness is verbal and non-verbal communication. So there are two types of communication. Information हम दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, या तो बोल के पहुंचाते हैं, या फिर non-verbal communication is our body language. So extending our range of communication skill will improve our assertiveness. So assertive skills क्या होते हैं? Establishing good eye contact. आप नजरों नीचे करके बात मत किया करें दूसरों से. Do not stare directly into the eyes of others. Stand or sit comfortably. Do not fidget. Talk in a firm and steady voice. आपको बहुत लाउडली बात करने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ही विस्पर में बात करने की भी जरूरत नहीं है. आपकी आवाज जो होगी फर्म होनी चाहिए और एक कंसिस्टेंट पैटर्न की होनी चाहिए. Your body language should not convey that you are stressed out or anxious, and you should actually take initiative in asking the others, how do you feel, what do you think about this, what is your idea about this. So you have to take up opinion of others. You should be genuinely interested in others, so that can lead to a lot of assertiveness. Diversion and distraction was one idea that we were talking about. So take time out from stressful situations. If you are in a stressful situation, take a time out. Okay, do not keep thinking about it. It will not help you. So just say that, write it down, any stressful thing, and just say to yourself that I will think about it tomorrow 9 a.m. in the morning. Get away from things and people that bother you. So there are certain people who cannot be helped, who are chronic stress givers in your life. Stay away from such people. Okay? Identify those people. Even if you have to leave that job, leave that job. No job is worth stressing out yourself. Okay, reduce stress level, calm down. How I'll talk about it later. And think logically. This is very important. When we are anxious or we are stressed, we stop thinking logically. हमारा दिमाग जो होता है वो worst case scenarios बना रहा होता है कि ये हो गया है, so ये एक छोटी सी situation आई है, so maximization करके it will lead to a worst possible outcome. जबकि ऐसा नहीं होता है. You have to think logically. What are the chances of that outcome happening? So there are certain thought stopping techniques. I like to talk about them in brief. So when there is a chronic worrying that is going on in your mind, आपके दिमाग में worry है जो कि जा नहीं रही है बार बार. So what are the thought stopping techniques that you can undertake? So one very simple thing is to tie a rubber band around your wrist, and whenever you are anxious or stressed out, you can pull that rubber band and release it. That small pain will actually stop that thought. Try that when you are worried too much. And another important and a better way of stopping any thoughts is when you are having a repetitive worry, just say it loudly to yourself, stop. You have to shout that out. And if you are able to successfully do it, then you have to lower your voice. Next time you say it in a lower voice. If you are able to do that even successfully, then come even lower. Then apne man mein keh sakte, then you can say it in your thoughts that stop. If you say stop, the thoughts will get stop. So you have to come from a very loud stop to stop that comes in your mind. और you can मन में कह सकते हो आप stop करने को. So how to relax? Relaxation response दो ही step से होता है. You have to choose a calming focus and let go and relax. This is a scientific technique. I'll talk about it now. So these are the certain relaxation response. अगर आप stressed out हैं, then you can focus on your breathing. जैसे कि मैंने आपको mindful breathing में बताया. और body scan. ये एक बहुत सिंपल तरीका है. If your body feels tensed और आपको कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, then you can sit at the table and try relaxation technique
focus on that body part. For example, in your calves, अगर आपके calves में पैर में दर्द हो रहा है, तो आप बैठ के उनको relax करने की कोशिश करें, वहां पे अपना focus ले जाएं, और this is known as body scan. Then guided imagery is imagining about pleasant situation. For example, imagining about your children, if you feel good about them, or imagining about a holiday, or imagining about a situation that brought joy to your life. So this can lower stress. Mindfulness meditation is very important technique, and it's a very useful technique. One aspect that we have spoken about is the mindful breathing. So you can read about it, about mindfulness meditation, and you can practice at home. There are multiple videos on YouTube how to practice mindfulness meditation. There are a number of apps on Android and iOS on Apple ecosystem जो कि आप डाउनलोड करके mindful meditation कर सकते हैं. It can lower your stress brilliantly. So these apps actually work. One, I can give you examples of certain apps like Headspace is one, Calm is one, CALM. So ये जो apps हैं ये बहुत help करते हैं किसी भी टाइम अपने स्ट्रेस को लोअर करने के लिए. Of course, yoga and other such techniques. Tai Chi एक ईस्टर्न टेक्निक और होती है. योगा हमारे खुद का एक सिस्टम है that helps in lowering the stress response. So even Hatha yoga, if you practice asanas apart from the breathing techniques help करती है अनुलोम विलोम and कपालभाति. But even if you practice those asanas, वो भी उसमें भी breathing control सिखाते हैं, and can lower the your anxiety and stress to a significant level. Repetitive prayer, this we practice in our homes, quite in our Indian homes. For example, कोई पाठ करना या कोई मंत्र का उच्चारण करना, कोई मंत्र को बोलना. For example, गायत्री मंत्र है या सुखमनी जी का पाठ है जो कि बहुत सारे सिख्स और हिंदूज भी करते हैं. And any such repetitive prayer that agrees to your spirituality or religion, Buddha chanting, कोई भी किसी तरह की repetitive prayer ये लोअर करती है स्ट्रेस को. So, and if you can achieve this, you can go to the next level. If you can find and write about the 3 good things that happen every day, that is known as gratitude journal. आप अपने gratitude को शो करते हैं अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है या कुछ अच्छा हुआ है. तो we Indians में बहुत writing की habit नहीं होती है. So we can inculcate that. अगर छोटा भी हम अपने एंड में एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं या हम राइट डाउन कर सकते हैं. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज व्हेन यू राइट इट डाउन, आवर माइंड कम्स टू नो कि हाउ यूजलेस आवर वरी वाज. अगर हम किसी चीज को लिख देते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हमारी वरी थी वो कितनी यूजलेस थी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है लिखने से. सो यू कैन राइट इट डाउन एज वेल. So I think that brings us to the end of our talk on stress and its management. I'll be happy to answer any questions, as the moderator already said, Ms. Nitya, that you can type in the chat box for any questions. And at the end, the take-home message from this talk is that stress is a continuous process. We cannot stop stress. Stress can be good and can be bad. Bad stress can lead to many unwanted consequences. Stress is depending on how we perceive, think, and respond to stressors. It is better to change ourselves rather than the environment. This is the most important take-home message, that हम अपने आप को change कर सकते हैं rather than trying to change somebody else. Stress can be handled easily if we perceive, think, and cope positively. Thank you very much for your patience today, and I'll be happy to answer any questions. Thank you. Thank you so much, sir. That was a very informative session. You have advised us on a lot of methods on how to cope with stress and identifying the challenges that we face in our day-to-day life. There were a few queries during the session in the chat box, so I just we can maybe take them up now, sir. There was one question: is there any tips on how to stay motivated? We generally have a routine which a lot of time gets monotonous, I believe, and people lack motivation then. So any comments on that, sir? Yeah, see, the motivations come from
external factors, we are motivated by external circumstances, or there is an internal motivation. So when we begin a task, we are externally motivated. हमें ये क्लास 10 में टॉप करना है, क्लास 12 में CBSE टॉप करना है, या 90% लाने हैं, या ये IIT का एग्जाम निकालना है, या SSC का एग्जाम निकालना है. So these are external motivations. That is, वो हमको स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है. बट द लॉन्ग टर्म मोटिवेशन की बात करी जो पार्टिसिपेंट ने, दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल मोटिवेशन. If we are internally able to motivate ourselves, and we can actually imagine ourselves, second order consequences बोलते हैं हम इनको. हमको अगर कोई पढ़ाई करनी है, किसी चीज की तैयारी करनी है, हमको तुरंत उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. But if we can imagine that our 8 hours of study or 6 hours of study today can lead to a second order consequence, मतलब हम आज एक चैप्टर पढ़ लेंगे, हमको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला. But if we can imagine that this will lead to a future good outcome, then we can stay internally motivated. So इसको कहते हैं second order thinking. Second order thinking अगर हम अपने अंदर ले आए, so it will be beneficial to most of us. Thank you, sir. Thank you so much. We had also spoken about, like you had sir advised regarding stress with respect to examinations, जो बच्चों में बहुत commonly देखा जाता है. तो one of our beneficiary, who's a parent, has posed this question that his son faces dizziness during the examination, which I believe is a common symptom. So any tips for handling that? So dizziness is one symptom that the parent is noticing or the child is noticing. So dizziness cannot be in isolation. This is a symptom of exam anxiety. So his performance will be suffering. He might be a very good student, very intelligent student, but his performance would be suffering if we do not address the anxiety associated with the exam. So it's best that you can seek the help of a mental health counselor, a psychologist, a psychiatrist, exam anxiety kam karne ke liye, because it is going to affect his career, his whole life. So it should not be taken lightly. इसको बहुत easily address किया जा सकता है if we seek professional help. And you can also in the meanwhile ask him to practice these techniques. Exam से पहले 1-2 महीना पहले शुरू कर दे तो अपना stress lower हो सकता है. और organized रहने की कोशिश करें, structured way में reading करें, organized रहने की कोशिश करें. वो हम सब करते हैं, but थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं. So अगर वो dizziness हो रही है, it's a symptom that should be addressed by a professional. Thank you. Sure, sir. Thank you. Sir, there were a few queries. We often hear a few terms pertaining to mental health, which a lot of time gets blurred. Like we have a term like burnout, then there is depression, anxiety, and stress. Though they Right. are all quite interlinked, but there are certain features where, like for example, depression, जब हमें professional help की ज़रूरत होती है, it's something that cannot be ignored. So, is there any way a beneficiary, can knows when he needs to go for professional help or when he can maybe try to handle things on his own? इसका मैं बहुत सिंपल सा एक आंसर दूंगा, क्योंकि then things would get complicated. When your functioning gets affected, अगर आपकी functioning affect हो रही है, maybe as a professional, maybe as a housemaker, maybe as a child who is studying in class 8, अगर आपकी functioning affect हो रही है, for example आप ऑफिस में उतने efficiently काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, घर में जो आप easily task पहले कर लेते थे आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप academically बहुत अच्छे थे, but then your academic performance is going down in class 8 or 9, then go to the professional. ठीक है, जब आपकी functioning affect होने लगती है, then उसका threshold cross हो जाता है, वो depression का या anxiety का. We all feel depressed, we all feel anxious sometimes or the other, but हमारी functioning नहीं affect होती. हो सकता है हम 2-4 घंटे के लिए anxious हो, या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए anxious हो, but इससे ज़्यादा नहीं. So our functioning does not get affected. But when the functioning gets affected, it's time to seek help. Yes, sir. So once our routine functioning is on the lower side or is getting affected, we should seek help. Yes, Right, sir. right. So we often hear that stress के वजह से there is a lack of sleep, lack of attention,
things like that. But stress can have physical symptoms also. Like a beneficiary has asked, ki, does gastric issues and stress have any relation? Yes, so our जो हमारा digestive system है, that is also known as the second brain. Any stress on our mind leads to stress on our digestive system. हमें acidity होती है. Many patients in the north, especially in this region, come to us कि हमारे पेट में गोला उठता है और दिमाग में गैस का गोला चला जाता है और उससे दर्द रहता है हमेशा. So this is just anxiety leading to acidity. Similarly, digestive problems आती हैं. We're not able to digest food. There is bloating. There is abdominal pain. Then there is dysregulation of bowel movements. Constipation हो जाता है या diarrhea हो जाता है. So these are all signs of stressful situations affecting the digestive system. So अगर हम उसको lower करेंगे with any kind of meditation or any kind of breathing focus, you will notice that your digestive system also improves. The functioning of the digestive system also improves. Thank you, sir. One question was regarding stress associated with learning or acquiring a new skill set. In today's world, as we all know, sir, we have to constantly update ourselves. And a lot Right. of times we need to upskill and keep learning a lot of things. A lot of time we are not able to learn the skill as easily as maybe our peers, and that leads to a lot of stress. So, Right. how is there any mechanism or any method to cope up with that, sir? No, see, certain unavoidable stresses are actually good for you. आपको अगर if we all recall, हम सबसे अच्छा कब पढ़ाई करते थे in our adolescent. जब हमें 10th का डर रहता था, बोर्ड का एग्जाम का डर रहता था 10th और 12th का, या फिर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना होता था, उसको क्लियर करना होता था. So these are, we know that these are unavoidable. हम 10th के बिना तो आगे नहीं जा सकते, या 12th के बिना आगे नहीं जा सकते, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किए बिना आगे नहीं जा सकते. So these are unavoidable stress that lead to growth in ourselves. Every such kind of stress leads to growth. अगर वो सर्कल एक मैंने दिखाया था बीच में जिसमें कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे, उसमें जो सेकंड जोन होता है वो ग्रोथ जोन होता है, when we are trying to learn something new. So as we grow older, as we, जब हमें कंपल्शन नहीं होता है किसी चीज का, जब we are doing things just for the sake of doing things, कोई कोर्स ऐसे ही लर्न करना है हमें जिससे उसका कोई बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पे असर नहीं पड़ेगा, तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है. We are not able to do it. We are not able to give full justice to it. So that is how we should actually think that this is a stress that will be good for our growth, for our careers. So इस तरह से हम इसको deal कर सकते हैं. Right, sir. One last query on the chat box, maybe for today. A lot of time, interpersonal relations get harmed, and that lead to stress. So, Right. and grudges, and then it becomes a vicious cycle which keeps adding on. So, is there any advice on that, sir, or how to move on, as somebody has asked? Interpersonal relations leading to stress. So any such conflict is a major cause of stress in our daily lives. If we are always conflicted with the other person, so it leads to deleterious consequences on our health. So इसमें मैंने जो the gist of this presentation was that we have to change ourselves. If we are constantly worried about the other person, if we are constantly blaming the other person, कि उसकी वजह से ये ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड की वजह से ऐसा होता है, या वाइफ की वजह से ऐसा होता है, वो ऐसा करती है, so then we'll not be able to come out of it. Of course, there are situations when some marriages, I'm talking specifically about marriage, are unsalvageable. Some marriages are not meant to be continued. Some marriages, unfortunately, are broken. But most of the marriages can be salvaged if both the partners actually identify the problem, label the problem, and try to cope better with any such stressful situation. अपने for example अपने spouse की जो habits हैं, that lead to a lot of stress in our daily lives. But we have to think from their point of view. We have to empathize with them, why the person is doing that, and we do not have to react every time the person repeats that. हम अपना coping skills बढ़ा सकते हैं. We have to एक बहुत अच्छी बुक है, मुझे याद आ रही है अभी,
जिसका टाइटल था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। छोटी मोटी चीजों के पीछे पसीना बहाना बंद करें। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि छोटी मोटी चीजों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं जिसकी आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। व्हेन वी आर ब्रॉट अप इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे, हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं अपने माइंडसेट में कि ये मेरा ही तरीका सही है। दूसरे का तरीका जो कि दूसरे घर से आया है, दूसरे उसकी चाइल्डहुड डिफरेंट रहा है, उसकी परवरिश अलग रही है, उसके हैबिट्स और उसका तरीका अलग होता है। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट वो गलत है। So we have to be flexible in our thinking if we have to stay happy in our marriages. तो मैरिज का एग्जांपल लिया, बट देयर आर अदर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। पेरेंट चाइल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। देयर आर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हु वांट द चाइल्ड टू ओबे देम, वांट टू से कि बच्चे को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो वी आर एक्चुअली स्टिमिंग और उसका जो ग्रोथ है हम उसको रोक रहे हैं। वी थिंक दैट वी आर डूइंग गुड कि हम बच्चे को सही राह दिखा रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट 11-12 साल के बच्चे जब हो जाता है उसको अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक पर्सन बनने की छूट देनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वी शुड बी सुपरवाइजिंग एवरीथिंग बट नॉट कंट्रोलिंग देम। सो जो कंट्रोलिंग नेचर है, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवरसेल्व्स। Thank you, sir. Thank you so much. With that, I think we can conclude today's session. On behalf of all the participants and CGHs, I thank Sir Dr. Manushree Gupta, who is a Associate Professor in the Department of Psychiatry in Safdarjung Hospital. Sir, thank you so much for such a valuable discussion and presentation. I thank all the participants for their interactions through the chat box. I would just like to say that we will meet yet again on the 4th Tuesday of this month again with another webinar, another topic. Till then, goodbye and take care. Thank you.